सबगोटाके फेरसँ एक बेर मैथिली MJG के पेपर क्लासमे स्वागत अछि। अहाँ सबके हम एगो बात बता दै छी, मैथिली ई जे अछि सेशन 2024सँ 28 वाला बच्चाके लेल फोर्थ सेमेस्टरमे जे अछि हुनका लेल ई बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन और उत्तर अछि, प्रश्न और उत्तर अछि। ई पेपर 5 मे जतेक महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव छल ताहिमेसँ हम 20 गो लऽ कऽ एलहुँ, जाहिमेसँ अहाँ सबके 10 या 8 गो जरूर देखैके लेल मिलत। हमर यूनिवर्सिटीमे की अछि, मैथिलीके सिलेबस कनि छोट छै, तऽ की होइ छै जे सेशन 23 सँ 27 वाला बच्चा छलै ओकरा जे प्रश्न पूछलकै फोर्थ सेमेस्टरमे, वएह 24 सँ 28 वाला बच्चाके फोर्थ सेमेस्टरमे पूछि दै छै। वएह की करतै 25 सँ 29 वाला बच्चाके पूछि देतै। ताहि दुआरे अहाँ सब बच्चा जतेक बार बार आएब तऽ हिनका ई प्रश्न पढ़बा, ई जे वीडियो अछि बहुत यूजफुल होइवला अछि। ताहि दुआरे ई वीडियो सब पढ़ब, बढ़िआँसँ लास्ट तक बनल रहब। तऽ चलू प्रश्न उत्तर स्टार्ट करै छी। पहिलुक प्रश्न अछि, मैथिली भाषाक आदि कवि के मानल जाइत अछि? तऽ विद्यापति जी। दोसर प्रश्न अछि, वर्ण रत्नाकर रचयिता के अछि? तऽ वर्ण रत्नाकर ज्योतिरीश्वर ठाकुर लिखने अछि। तेसर प्रश्न अछि, मैथिली भारतक संविधानक कोन अनुसूचीमे सम्मिलित अछि? तऽ ई 8म अनुसूचीमे सम्मिलित अछि। चौथा प्रश्न अछि, मैथिली भाषा ककर भाषा परिवारसँ सम्मिलित अछि? तऽ मैथिली भाषा हिंद आर्य भाषा परिवारसँ सम्मिलित अछि। पाँचमा प्रश्न अछि, कृतिलता के रचनाकार के अछि? तऽ एकर उत्तर भऽ जायत विद्यापति। विद्यापति अवहटमे 2 गो रचना केने छथिन, कृतिलता और कृति पताका, अहाँ सब याद रखब। छठा प्रश्न अछि, दीनाभद्री लोकगाथा कोन क्षेत्रमे प्रसिद्ध अछि? तऽ ई भऽ जायत मिथिलामे प्रसिद्ध अछि। सातवां प्रश्न अछि, मैथिली भाषाके लिपिक नाम की अछि? तऽ मिथिलाक्षर तिरहुता। आठवां प्रश्न अछि, मैथिली दिवस कखन मनायल जाइत अछि? तऽ सबगोटा बुझै छियै जे 22 दिसम्बरके मनायल जाइत अछि। नौमा प्रश्न अछि, मैथिली भाषाके प्रमुख लोकनृत्य की अछि? तऽ झिझिया मैथिलीके सबसँ प्रमुख लोकनृत्य अछि, झिझिया, याद राखब। 10वां प्रश्न अछि, मैथिली साहित्यक आधुनिक युगक प्रमुख साहित्यकारमे एक गोटेके नाम लिखू? तऽ हरिमोहन झा सबसँ महत्वपूर्ण अछि। 11वां प्रश्न अछि, पुरुष परीक्षाके रचनाकार के अछि? तऽ पुरुष परीक्षा विद्यापति लिखने छथिन। 12वां प्रश्न अछि, मैथिली भाषाके प्रमुख लोक पर्व की अछि? तऽ सबगोटा बुझै छियै मैथिली भाषाके प्रमुख सामा चकेबा अछि। 13वां प्रश्न अछि, मैथिलीके भारतक संविधानक 8म अनुसूचीमे कखन शामिल कयल गेल? तऽ 2003 ईस्वीमे शामिल कयल गेल। तकर बाद 14वां प्रश्न अछि, धूर्त समागमके रचनाकार के अछि? तऽ धूर्त समागम ज्योतिरीश्वर ठाकुर लिखने छथिन। वर्ण रत्नाकर ज्योतिरीश्वर ठाकुर लिखने छथिन, तऽ यहाँ सब याद राखब। 15वां प्रश्न अछि, मैथिली भाषाके प्राचीन लिपि की कहल जाइत अछि? तऽ तिरहुता मिथिलाक्षर कहल जाइत अछि। मैथिली भाषाके प्राचीन लिपि की कहल जाइत अछि? तिरहुता मिथिलाक्षर। 16वां प्रश्न अछि, विद्यापतिक जन्मभूमि कतऽ मानल जाइत अछि? सबगोटा बुझै छी विद्यापति मधुबनी जिलाके बिस्फीमे जन्मल अछि। तऽ मधुबनी जिलाके बिस्फी भऽ जायत, किएक तऽ हुनकर जन्मस्थान वएह छियै। 17वां प्रश्न अछि, मैथिली लोकगीतमे विवाह गीतके की कहल जाइत अछि? सबगोटा बुझै छियै लोकगीतमे विवाह गीतके सोहर आ समदाउन मैथिलीमे कहल जाइत अछि। 18वां प्रश्न अछि, मैथिली साहित्यक आधुनिक गद्यकारमे प्रसिद्ध साहित्यकार के अछि? तऽ सब बुझै छियै गद्यकारमे प्रसिद्ध के अछि? तऽ हरिमोहन झा। 19वां प्रश्न अछि, मैथिली भाषा मुख्य रूपसँ कोन राज्यमे बाजल जाइत अछि? तऽ मैथिली बिहारमे सबसँ बेसी बाजल जाइत अछि। आब कनि मनि अहाँके की होइ छै, मैथिली नेपालोमे बाजल जाइ छै। तकर बाद 20वां प्रश्न अछि, मैथिली भाषाके प्रमुख कवि के मानल जाइत अछि? तऽ मैथिली भाषाके सबसँ प्रमुख कवि विद्यापति छथिन। विद्यापतिके कवि कोकिल सेहो कहल जाइ छै, कवि कंठहार सेहो कहल जाइ छै, ईसब हुनका उपाधिके रूपमे भेटल छै। अहाँ सबके प्रश्नमे इहो पूछल जा सकैत अछि जे कवि कोकिलके रूपमे किनका जानल जाइत अछि? तऽ अहाँ सब कहबै विद्यापति। कवि कंठहारके रूपमे किनका जानल जाइत अछि? तऽ अहाँ सब कहबै विद्यापति। ई बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तर अछि। ई सब बच्चाके लेल महत्वपूर्ण है, जतेक बच्चा फोर्थ सेमेस्टरमे छी आ जे भी सेशनसँ आबै छी, 23 सँ 27, 24 सँ 28, 25 सँ 29 या 26 सँ 30 या 27 सँ 31 या 28 सँ 32 या 29 सँ 33 या 30 सँ 34, तऽ सब बच्चाके लेल महत्वपूर्ण हैत। तऽ वीडियो अहाँसँ जरूर लास्ट तक कऽ लेब, बहुत बढ़िआँसँ याद कऽ लेब, किएकि तऽ 10 गो प्रश्न पूछै छै, प्रत्येक 2 नम्बरके रहै छै। तऽ अहाँके
बढ़िया से क्वेश्चन पढ़बाक अछि। और अहाँ सब अगर सिलेबस नहीं बुझल हो या परीक्षा के पैटर्न नहीं बुझल हो, पहिलुक सेमेस्टर के बच्चा छी तो कमेंट में लिख देब, तो अहाँके वही अनुसार हम वीडियो बना कर सब कुछ समझा देब। बहुत बढ़िया, धन्यवाद।